Shivam Rajput back again with a new video on a video series of CS and HF 4 Sciences. Finally, I'm back with the most awaited topic, that is ocean waves. But before going to anywhere else, I would like to say sorry to you all. I know इस बार बहुत late हुआ. I really apologize for that. I hope you understand. Secondly, I would like to say कि अब से CSIR तक I will be continue uploading the videos. I just want your support. Please do like, comment, share and subscribe and watch our videos. Subscribe करने में 1 सेकेंड लगेगा, आपका कुछ जाएगा नहीं. So please subscribe my channel. So without wasting a time, start this video ocean waves. Now why this topic is important? If you see any year question, कोई भी साल का देख लो, you find that there is a question from ocean waves. It's very important topic. But it's not like ocean current जहाँ कुछ रट लिया ocean currents के name और सब समझ में आ गया. No, it's whole conceptual. Okay, so we'll begin with the very basics और हम लोग इसको 2-3 पार्ट में बनाएंगे so that you will come to know the entire topic. Okay, so ocean waves पहले देखते हैं दिखता कैसा है. Let's see. So here is this website earth.nalaschool.net. यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं waves surface and let's see how the waves look like on the surface. So here you can see in different direction waves are moving across the India. There is this cyclone in Bay of Bengal and इससे भी हर direction में waves are spreading away from the cyclone. This is basically a cyclone. If I turn this into a wind, you literally see the fast moving wind over here. So yeah, cyclone की भी एक topic बना देंगे future के लिए. Let's see what is the ocean wave. So wave अगर आपने physics में पढ़ा होगा, it's a disturbing force. So ocean में waves होते हैं, atmospheric waves are there. Physics में भी हम लोगों ने waves पढ़ा हुआ है. So what exactly a wave is? अगर हम ocean की बात करते हैं, so over there waves are nothing but a disturbance on the water surface, inside the water surface or between the two medium of the water surface. Disturbance, okay, जिससे undulations form हो रहे हैं. It can be inside, it can be on the top or on the bottom, anywhere. ठीक है. So what is the difference between a wave and a current? आप कैसे बोलोगे? Here you can see wave, right? This is wave. अभी मैंने wave पे switch किया. This is wave. But when I switch to current, it looks something like this. देखो यहाँ current आपको दिख रहा है. This is what? This is equatorial currents. Equatorial counter current, equatorial current, हर oceans में होते हैं. So what is the difference between waves and current? So wave is basically a transfer of energy from one place to another place without movement of mass. Mass की movement नहीं हो रही है, energy जा रहा है. While on the other hand, current is a movement of mass as well as energy. इसको ऐसे समझो, साइकिल का स्टैंड है, आपने एक बार पैर से मारा धक्का साइकिल के एक एंड पर, दूसरे एंड की साइकिल गिर गई. सो यहाँ क्या मूव कर रहा है? साइकिल इटसेल्फ मूव नहीं कर रहा है. आपने जो काइनेटिक एनर्जी दिया वो एक साइकिल से दूसरे साइकिल होते हुए फाइनली एट द एंड तक वो गई. दैट इज योर वेव. तो वेव में पानी ये मूव नहीं कर रहा है, पानी एक्चुअली नहीं मूव कर रहा है. वाटर इज देयर इटसेल्फ. वाटर अपने जगह पे ही है. इट इज मूविंग इन द सर्कुलर मोशन. देयर इज नो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, but there is a horizontal displacement of energy. That is called wave. लेकिन जैसे हम करंट पे शिफ्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ इक्वेटोरियल करेंट्स आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मूव कर रहे हैं. यहाँ मास भी जा रहा है और एनर्जी भी जा रहा है. अगर कोई यहाँ गर्म पानी होगा, दिस वार्म वाटर विल शिफ्ट टुवर्ड्स द ईस्ट. दिस इज करंट. So I hope you understand the difference between wave and current. Okay, so by the way, offer is going on. बहुत ज़्यादा प्यार आपका मिल रहा है this time.
इतना सस्ता भी मैंने आज तक कभी नहीं किया, और पूरे इंडिया में नो बडी, आई लिटरली से नो बडी कैन गिव दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग इन ओनली दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। 6,500 का फ्लैट डिस्काउंट है, व्हाट एल्स यू वांट। इतनी सारी चीज़ें एक साथ, मॉक टेस्ट पेपर्स आर देयर, अब भी नहीं तो कभी नहीं। दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट टू क्रैक CSIR। तो प्लीज़ जाओ, ऑफर को एंजॉय करो। 3500 रुपये की है, बस 3500, और फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। ऑलरेडी 35 प्लस क्रॉस हो चुका है, आई एम टेलिंग यू, आई थिंक 38। सो गो एंड चेक आउट द कोर्स, करो अभी। 6 कोर्स मिल रहे हैं। और एक और गुड न्यूज़ है कि वी आर कमिंग बैक विद द न्यू कोर्स सून, जो अभी कहीं अवेलेबल नहीं है, लिटरली कहीं अवेलेबल नहीं है। ओके, सो विल publish it soon. Okay, so coming to the waves. Now आपने कुछ वेव्स देखी होंगी आई गेस। आप अगर बीच पे गए हो, यू फाइंड टाइडल वेव, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून के कारण होता है। इट्स अ वर्टिकल फ्लिपमेंट ऑफ द वेव। आपने ऐसे छोटे छोटे स्वेल वेव्स देखे होंगे। सो ये स्वेल वेव्स, वॉट एवर द वेव इज, राइट, इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग ओवर देयर। टाइडल को हटा दो तो सच वेव है, स्वेल वेव है, देन देर आर द वेव्स लाइक inertial waves. So these waves are not producing over there, उनका सोर्स रीजन कहीं और होता है, और वो उस सोर्स रीजन से वो ट्रैवल करते हुए अदर डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, फ्रॉम दिस साइक्लोन वेव इज गोइंग ऑल द अदर डायरेक्शंस, हर जगह यहाँ से जा रहा है। जैसे कि अगर आप तालाब में एक कंकड़ फेंकते हो, पत्थर फेंकते हो, इट विल मूव इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। So you are basically producing a wave which is propagating in all the directions. So that is what the wave is. So basically, to generate a wave, to create a wave, you need a force, and that force is considered as generating force of the wave. Now to balance that wave, there is this wave called restoring force. Okay. So restoring force balances the generating force to simply stable the disturbance. Disturbance is created by generating force, and to balance the generating force disturbance, we use this restoring force. So over here we have a cup of water. Now suppose you are blowing air over the cup of water. What happens? It will create a kind of deformation on the surface where there is a boundary between air and the water. वहाँ disturbance will create, right? Now that blowing of air through mouth is basically a generating force. Now in the same surface we have surface tension of water, right? So जब आप generate कर रहे हो, this is producing a capillary wave. Now this capillary wave, the disturbance is generating by your blowing of air is getting restored by the hydrogen bonding in the water, because the wave is like weak over here, it's very weak. So hydrogen bond of the surface water is strong enough to compensate your generating force. If you are keep blowing the air, there will be disturbance, but the hydrogen bond will keep working. Once you stop the blowing, it will restore to the flat surface. Now think of it. So this is capillary wave. Now think of it. This time you are using a blower machine where the wind speed is very high. In that case, hydrogen bond is not strong enough to store, to bring back the surface stable. In that case, restoring force will be gravity. So gravity will be the restoring force. So remember, in the ocean there are only two types of wave. Either it's a capillary wave due to uh, uh, weak wind action, or a gravity wave where we have very strong actions like tsunami, or like a cyclone, or
a storm in the ocean, that will create a gravity wave. So gravity wave may, we have restoring force, that is gravitational pull of the earth, while in the case of capillary wave the restoring force is a hydrogen bond of the surface water. Okay. Okay, now wave form along the boundaries. It can move along the boundaries. So suppose here we have three different fluids. One fluid is this empty bottle over. This is the empty bottle, one fluid, which is basically air. We have the second fluid, which is a kind of oil, and this is the third fluid, which is the water. So water is the heaviest one, this is the lighter, and this is the lightest. Okay, now here we have two different boundaries. So on the surface of basically air water boundary, air oil boundary, we have one basically medium boundary over here, and another medium boundary is over here. Okay, so you can literally see these are the surface wave. If there is this wind producing some disturbance over here, these are considered as a surface wave. While if the wave is produced along the different density zones, then inside a water body, then it is considered as a internal wave. So remember, internal wave always produce along the Picnoc line. Now, what is the Picnoc line? Picnoc line is the line along which density varies rapidly. Okay, that is called Picnoc line. Now just think of it. There is a internal wave inside of water, and suppose there is this submarine which is going at a depth of say 500 meters, and the maximum depth it can reach is 1000 meters. Say 1000 meters is the limit up to which this submarine can survive the hydrostatic pressure. Now just think, this submarine is caught into a internal wave. Now wave moves in a sine wave pattern, right? So there is a crest, there is a trough. So suppose the trough of that internal wave is somewhere in between 1200 meter. The limit of the this submarine is 1000 meter only, but now so think the trough of that wave is 1200 meter. So what happened? The submarine will collapse. So internal waves are really dangerous for submarines. If they caught into internal waves, there is a chances of fatality. Now here we can see impact of internal wave on the surface. It's not like you can literally see the surface expression of internal wave. So here you can see these are the surface wave which occupies the uppermost part, but if you go down here we can see between two different density water. Now think of it, there is this more after monsoon time in Bay of Bengal, you have a fresh water on the surface which is discharged from the river, but there is subsurface water which is saline in nature, and those are basically a dense water, right? So in between them there is the pycnocline layer, right? And along that layer you find the internal waves. Now these internal waves sometimes are so large that you can literally see from the space. So here in this view you can literally see the internal waves are highlighted by sunlight. This bright areas over here is basically subsurface internal waves whose exposure we can see on the surface. Now in this diagram we can see, in this plot we can see with depth how the internal waves vary. See the depth, it is literally from somewhere 2 to 3 meters to goes up to some 12 to 13 meter, and the outerward limits are up to 15 meter. And these colored basically phytoplanktons variations are there with the depth you can see. So what happened along the boundaries? So there is this generating wave, it can be a wind, it can be a splash, it can be a gravitational force of sun and moon which creates a disturbance, and now this disturbance is balancing out by this restoring force which can be a gravity, which can be a hydrogen bond in the case of capillary waves, which keep
making the water stable. That this is how wave generate and wave decline. So if the generating force is weak, then the water will be still and there will be a swell wave. Basically, we have this fine capillary waves, okay, very fine capillary waves. But if the waves are very strong, like tsunami, like tide, in that case, we'll have gravity waves, okay. So now here we have different type of generating force. So these four waves, remember capillary, chop, swell and siege. These waves are produced by the wind, while on the other hand, tsunami is produced by the landslide, underwater earthquakes, splash if you suppose put a very huge iceberg or yeah ice you can say ice shelf into the southern ocean, it will create a earthquake, a tsunami, right? So that is the another reason for generating the force. And finally we have the sun and moon whose gravity creates the tidal waves. By the way, here I will put the link for the tides. I have videos on the tides, kindly have a look on that also. Description में भी मिल जाएगा, so please have a look. So here you can see the wave height and the wave period of different waves. Now in the case of capillary wave, wave height is really less. It's in less than 10 centimeter. But as you move towards the chop waves, swell waves, you can find it goes up to 10,000 centimeters. Then in case of sight waves, which is basically oscillatory waves, again the wave height will decrease. In the case of tsunamis, it will further increase. And yeah, sun and moon will create the tide. The height of the tide depends upon the morphology of the coastal region. It's not on the gravity, क्योंकि gravity अर्थ पे चारों ओर it's almost equal. It's not कि you will find 10 times 20 times. No, it's not like that. तो बे ऑफ फंडी एक जगह है समवेयर क्लोज टू फ्लोरिडा. ओवर देयर यू विल फाइंड टाइडल हाइट गोज अप टू 17 मीटर. बट सम इन गोवा में इट विल गोज अप टू सम meters, 1 meters max to max, like that. So here you can see the effect of wave on various things. So these are sea grasses which keep moving in a certain kind of motion because of this internal waves. देखो यहाँ दिस सी सर्फर्स जो लोग सर्फिंग करते हैं सी वेव्स पे, दे हार्नेस दिस एनर्जी. सो वेव पर वो लोग राइड कर रहे हैं. दे आर नॉट यूजिंग एनी पेट्रोल और ऑयल और इलेक्ट्रिक एनीथिंग, दे आर सिंपली फ्लोटिंग ऑन इट. और यहाँ देखो कचड़ा ओशंस में इट इज कीप मूविंग इन ऑर्बिटल मोशन बिकॉज ऑफ दिस वेव एक्शन. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव जो तुमने पढ़े होंगे इससे पहले इन फिजिक्स, अ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड अ ट्रांसवर्स वेव. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव, मेरी बातें तुम सुन रहे हो थ्रू योर मोबाइल बिकॉज ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल वेव. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता क्या है, बेसिकली देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी through the region of compressed zone and expanded zones. So जो आवाज़ तुम सुन रहे हो मेरी, वो बेसिकली कैसे आ रहा है, जो विंड है वो कंप्रेस हो रहा है फिर एक्सपैंड कर रहा है, फिर कंप्रेस हो रहा है एक्सपैंड कर रहा है, लाइक दिस. द साउंड इज मूविंग टू योर ईयर्स, राइट, back and forth motion. This is how a longitudinal wave move. Then there is this transverse wave, जहाँ एनर्जी का मूवमेंट होता है 90 डिग्री ऑफ द प्रोपगेशन. ओके, ट्रांसमिशन के डायरेक्शन के 90 डिग्री पर देयर इज दिस पार्टिकल मूवमेंट. ओके, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, सपोज एनर्जी प्रोपोगेट कर रहा है टुवर्ड्स योर आई, जैसे लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव. यहाँ एनर्जी वाइब्रेट कर रहा है एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. देन इन अ केस ऑफ वेव देयर इज द थर्ड थिंग दैट इज ऑर्बिटल. तो यहाँ क्या होगा, ऑर्बिटल के केस में यू विल फाइंड बोथ. देयर इज दिस ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, दोनों को कंबाइन करेंगे देन यू विल फाइंड अ सर्कुलर पाथ. ओके,
सो एक में वाइब्रेट कैसे कर रहा है एनर्जी 90 डिग्री पर, एक में वाइब्रेट एनर्जी कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन. सो नाउ सपोज आप दोनों को राइट एंगल पर एनर्जी है, ट्रांसवर्स इज एट 90, लॉन्गिट्यूडनल एट 0, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, इट इज समवेयर एट 45, राइट. सो दैट इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन. ओके, सो ओशंस में यू विल हैव दिस ऑर्बिटल वेव्स. तो अब जैसे सपोज आप डक को रखते हो बाथिंग टब में और उसमें हाथ से यू आर प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑन द surface ऑफ द वाटर, what will happen, it will simply rotate the duck in the orbital motion at a same place. ठीक है, ऐसा नहीं, अनलेस एंड अनटिल, अब जैसे ओशन में आपने छोड़ दिया बहुत सारे डक्स को, तो वो एक जगह पे ही घूमते रहेंगे अनलेस एंड अनटिल वो करंट उनको पकड़ ना ले. अगर करंट पकड़ लेगा इट विल मूव इनटू द सेम डायरेक्शन. बाय द वे हियर आई हैव दिस बार कोड, यू कैन स्कैन इट एंड यू कैन लर्न द एनिमेशन, कैसे ये एनिमेशन के थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, नाउ थिंक ऑफ इट. तो अगर मानते हैं कि सरफेस पे वी आर हैविंग दिस ऑर्बिटल मोशन, जहां वाटर एक ही प्लेस पे ऑर्बिटल मोशन में मूव कर रहा है, तो क्या ये थ्रू आउट द ओशन होता है? नो, इट्स नॉट. क्योंकि डिस्टर्बेंस, सपोज देयर इज अ विंड जनरेटेड वेव, सो विंड की एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, इट इज ऑन द सरफेस. सो मैक्सिमम ऑर्बिटल डायमीटर कहाँ होगा, इट इज ऑन द सरफेस. एज यू गो डाउन, the diameter of that orbital motion will decrease, right? And as it decreases, there is this point where it is zero, जहां अगर आप उसके नीचे हो, you won't find the orbital motion. I will give you a simple example. आप बॉडी जो होता है लाइफ सेवर जैकेट, आप उसको पहन लिए, आप ओशन में फ्री फ्लोट कर रहे हो, आपके नीचे से वेव जाएगा, आप एक ही जगह पर यू विल गो अप डाउन इन ऑर्बिटल मोशन. बट नाउ थिंक ऑफ इट, wave action कहाँ हो रहा है, it's on the surface. But as you go down, go down, go down, the orbital motion will keep decreasing. The radius of this orbital motion will decreasing, decreasing, decreasing. Finally, it will reach a point where there is a water of no motion, that is a wave base. Okay, and what is this still water level? So if you remove all the disturbances, if the restoring force is more than a generating force, the water level will coincide with the still water level. That is called still water level. And there's this wave height. So crest and trough के बीच का distance is called crest height. What is crest? The highest point. And what is trough? The lowest point on the wave surface. What is wavelength? Between two continuous crest या दो ट्रफ के बीच की दूरी, that is considered as a wave length. Okay, so remember, in a deep water the wave base is half of the wavelength. अब suppose एक example से समझते हैं. You are in the ocean, okay, there is a very huge wave which is approaching you. तो उस वेव का जो फर्स्ट क्रेस्ट है से इट रीचेज यू एट टी इजकल टू 0, ठीक है, और टी इजकल टू 5 पर उसका दूसरा क्रेस्ट आ रहा है. सो टी 0 से टी 5 के बीच में यू आर हैविंग वन वेव लेंथ बिकॉज दूसरा क्रेस्ट. सो कंटिन्यूअस क्रेस्ट के बीच की दूरी दैट इज कंसिडर्ड एज द वेव लेंथ, राइट. सो from here you have time, you have distance, you can find a period, right? You speed आप निकाल सकते हो distance by time करके. Plus अगर आपको wavelength मालूम है, if you make it half, that will be the wave base. अगर आपको दूसरा क्रेस्ट बीच पर 10 मीटर दूर दिख रहा है, या से यू आर फ्लाइंग अ ड्रोन से दिख रहा है कि दूसरा क्रेस्ट है से 20 मीटर्स दूर, तो वेव बेस क्या होगा 10 मीटर डेप्थ पर. ओके, मतलब 10 मीटर से नीचे अगर कोई चीज़ डालोगे इट वोंट हैव एनी इफेक्ट ऑफ वेव unless and until there is an internal wave. That is some other concept I have already explained to you. Okay, now let's see different types of depths.
और वहाँ वेव कैसे फॉर्म होंगे. सो सपोज देर इज दिस डीप वाटर वेव, आप ओपन ओशन में हो. ओवर देयर आई टोल्ड यू हाफ द वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट इज वैलिड ओनली इन द ओपन ओशन. ओके, सो आप ओपन ओशन में हो, सुनामी मूव कर रहा है, आप क्रूज में बैठ के यू आर हेडिंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, समवेयर इन द इंडियन ओशन, एंड देयर इज दिस सुनामी जो आपके नीचे से फर्स्ट वेव गया उसका. ओके, इट वोंट अफेक्ट यू बिकॉज आई विल टेल यू लेटर, क्योंकि वेव हाइट बहुत कम होता है ओपन ओशन में, सो इट वोंट अफेक्ट इन द ओपन ओशन. सो एक पहला वेव गया क्रेस्ट आपके क्रूज के नीचे से, आफ्टर हाफ एन आवर दूसरा क्रेस्ट आया, चला गया. सो टाइम के बेसिस पे स्पीड भी है, आपके पास टाइम भी है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो कि इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस रहा होगा. ओके, सो से डिस्टेंस आया 100 meters बिटवीन टू डिफरेंट क्रेस्ट. यानी इफ यू गो 50 meters डाउन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द सुनामी, सिर्फ 50 मीटर के डेप्थ पर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज वैलिड ओनली इन द डीप वाटर्स. देन कमिंग टू द ट्रांजिशनल वाटर. सो ट्रांजिशनल वाटर जो इंटरमीडिएट होते हैं, व्हाट इज दिस ट्रांजिशनल वाटर? तो ट्रांजिशनल वाटर इज द इंटरमीडिएट जोन बिटवीन द डीप वाटर एंड द सैलो वाटर. सैलो वाटर कहाँ होता है? ऑन द बीच. डीप वाटर कहाँ होता है? इन द ओपन ओशन, तो समवेयर ऑन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, वहाँ के रीजन्स, ट्रांजिशनल वाटर. सो वहाँ वाटर डेप्थ is greater than 1/20 of the wavelength but less than 1/2. This is the reason. तो वहाँ आपका वाटर मतलब, सो इसको ऐसे समझो, ट्रांजिशनल वेव्स के केस में जो वाटर डेप्थ होगा जहाँ तक मोशन यू कैन फाइंड, इट इज ग्रेटर देन 1/20 ऑफ द वेवलेंथ से ज़्यादा होगा, बट 1/2 से कम होगा. मतलब इसके और इसके बीच में लाई करेगा मोशन. ओके, देन देयर इज दिस शैलो वाटर वेव. सो ओशन फ्लोर का इंटरफेस, ऐसे केस में क्या होता है कि ये नो मोर सर्कुलर रहता है, ये सर्कुलर होगा ही नहीं. देख रहे हो इस केस में, इफ यू गो डाउन इट इज सर्कुलर, हियर इट इज स्लोली टर्निंग इनटू ऑब्लेट. ये ऑब्लेट हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इट इज टर्निंग इनटू इलिप्स. यू कैन से इलिप्स, सर्कुलर नहीं रहा. अब इस केस में इट इज फुल्ली इलिप्स, क्योंकि देयर इज दिस फ्रिक्शन ऑफ द सब सरफेस. इस केस में जो वाटर डेप्थ होगा इट इज लेस देन 1/20 ऑफ द वेवलेंथ. यानी आपके वेवलेंथ का 1/20, जैसे 20 मीटर वेवलेंथ है तो सिर्फ 1 मीटर तक ही यू विल फाइंड द वेव एक्शन. 1 मीटर के नीचे यू वॉन्ट. इसके केस में क्या होगा, फिर से 20 मीटर लेते हैं वेवलेंथ, तो 1 मीटर के ऊपर और 10 मीटर के नीचे, इस रीजन में 10 से 1 के बीच में यू विल फाइंड वेव एक्शन. 11 पे नहीं मिलेगा. यू गेटिंग माई पॉइंट? अब वेव पीरियड क्या होता है? सो सपोज ये चिड़िया है, ये अभी क्रेस्ट पे बैठी हुई है, वेव के क्रेस्ट पे. अब जैसे ही क्रेस्ट आया तो ये इसका डूबने लगेगा तो उड़ जाएगी. ठीक है, फिर ये क्रेस्ट की जगह पर ट्रफ आ जाएगा, फिर वो बैठेगी, और फिर से एक बार और क्रेस्ट आएगा यहाँ तो फिर उड़ जाएगी. तो 2 क्रेस्ट आने में जितना टाइम लगा, दैट इज वेव पीरियड. 2 साइमल्टेनियस क्रेस्ट और 2 साइमल्टेनियस ट्रफ के बीच में जो टाइम लगा, दैट इज कंसिडर्ड एज अ पीरियड. तो मतलब यहाँ देख रहे हो ना, सेकेंड बाई वेवलेंथ, कितना टाइम लगा एक वेवलेंथ को क्रॉस करने में, दैट इज कंसिडर्ड एज पीरियड. जैसे कि ये स्वेल वेव है जो कि ओपन ओशन सी एरिया से आ रहा है. सी एरिया इज द एरिया वेयर दिस वेव प्रोड्यूस्ड. ओके, वहां से ये आ रहा है. तो सपोज ये स्वेल वेव कोस्ट पे टकराया 10:10 पर, दूसरा स्वेल वेव टकराया 10:20 पर. तो हम यहाँ कर सकते हैं कि पीरियड है 10 सेकेंड का, क्योंकि एक वेवलेंथ को टकराने में, 2 क्रेस्ट को टकराने में 10 सेकेंड का गैप है. राइट? सो यहाँ देखो, स्वेल वेव प्रोड्यूस्ड बाय द विंड्स पोटेंशियली 1000 ऑफ किलोमीटर्स अवे, ओपन ओशन में जनरेट होते हैं. अभी साइक्लोन वाला एग्जांपल मैंने दिखाया था, वहां से स्वेल वेव जनरेट हो रहा है. इट इज गोइंग इन द ऑल द डायरेक्शंस.
सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो वेव आ रहा है वो 70 माइल्स पर आवर की स्पीड से आ रहा है. यानी माइल क्या है, एक डिस्टेंस है, आवर क्या है, टाइम है. यानी वेव लेंथ बाई पीरियड इज कंसिडर्ड एज द वेव स्पीड. ठीक है. तो रिमेंबर, period is inversely proportional to wavelength, while speed is directly proportional to wavelength by period. Directly proportional to wavelength inversely to period. ठीक है. इट्स अ बेसिकली डिस्टेंस बाई टाइम. वेवलेंथ क्या है, एक गैप है, राइट. और पीरियड क्या है, इट्स अ टाइम, 1/t. ओके. नाउ सुनामी को जैसे मेजर करना है. सो सपोज सुनामी की स्पीड नापनी है, आपको वेवलेंथ मालूम होना चाहिए. दो वेव के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है. पीरियड कितना है, से 15 मिनट्स. एक क्रेस्ट को आने में 15 मिनट पहले टकराया पहला वेव. तो जैसे 2004 में जब सुनामी आया था, अचानक से नहीं, एक आया, उसके 10 मिनट बाद दूसरा अटैक हुआ, दूसरा क्रेस्ट आया, फिर तीसरा क्रेस्ट आया, लाइक दिस. ओके. सो कीप हीटिंग द इंडियन कोस्ट. सो 15 मिनट, दैट इज 1/4 लिख सकते हैं. तो यानी हम कह सकते हैं कि सुनामी की स्पीड होगी 800 किलोमीटर पर आवर. अगर हमको वेव लेंथ और पीरियड दे दे, यू कैन फाइंड द स्पीड. और इस पे न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं. कीप इन माइंड, इतने आसान न्यूमेरिकल्स यू वोंट गेट. ठीक है. तो अगर आ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं. वेव स्टिफनेस क्या होता है. सो वेव स्टिफनेस इज नथिंग बट अ वेव हाइट बाई लेंथ. सो यहाँ देख रहे हो आप, दिस इज वेव लेंथ, दिस इज वेव हाइट. वेव हाइट बाई लेंथ. हाइट को लेंथ से डिवाइड कर दोगे, एच बाई एल इज स्टिफनेस. ओके. वेव फ्रीक्वेंसी समझ गए, पीरियड इज फ्रीक्वेंसी. वेव स्पीड को सेलेरिटी भी टर्म यूज करते हैं. इट इज डिनोटेड बाई सी इंस्टेड ऑफ एस. ओके. सो वेव स्पीड इज वेवलेंथ बाई पीरियड. फॉर अ डीप वाटर द वेव स्पीड इज दिस 1.25 अंडर रूट एल. फीट में ये फॉर्मूला है. और सपोज लेंथ की जगह पर आपको टाइम पीरियड दे दे, टी दे दे, पीरियड दे दे, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला. ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो छोड़ना नहीं होता है. ओके. कीप इन माइंड. सो ये हो जाएगा, दिस इज द रिलेशन ऑफ वेव स्पीड विद द वेव लेंथ, एंड दिस इज द रिलेशन ऑफ वेव स्पीड विद द वेव पीरियड. ठीक है. नाउ हियर आप देखो, स्पीड दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है. This is feet per second, this is meter per second, and you can see this plot how it goes. So यहाँ जैसे इस पे देखो आपको स्पीड कितना है, ये 8, ये जो 0.8 लिखा हुआ है, इस पे आपको स्पीड आएगा कुछ 12.5 मीटर पर सेकेंड, while the wavelength is 100. देख रहे हो, वेवलेंथ 100 मीटर है यहाँ. सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक. अगर ऐसे प्लॉट वाला क्वेश्चन दे दे, सपोज यहाँ पूछ दे कि किसी पॉइंट पर व्हाट विल बी द पीरियड और व्हाट विल बी द, ये वैल्यूज नहीं देंगे वो लोग, बस ऐसे प्लॉट दे देंगे, कोई एक पॉइंट दे देंगे ए बी सी डी. दे विल आस्क यू व्हाट विल बी द पीरियड, व्हाट विल बी द वेव स्पीड. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू सॉल्व. सैलो वाटर, ये जो फॉर्मूला था दैट इज वैलिड फॉर द डीप वाटर. नाउ कमिंग टू द सैलो वाटर. सैलो वाटर में यू नो कि 1/20 से कम होता है डेप्थ. ओके. सो 3.13 अंडर रूट डी, इट्स इन मीटर, और ये है फीट. मीटर वाला याद रखो, दैट इज सफिशियंट. नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर राउंड. सो यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आई होप आपको इतना समझ में आया हो. एंड इफ आई डिड I know this time I'm very late. It's been really 3 months and I really apologize for that. I hope you guys understand. तो माफ करो. I will keep making the video again and again, और अब मैं continuous रहूँगा. That's my promise to you. और this is just a first part of wave. ऐसे बहुत सारे tons of concept आने वाले हैं bro. Tons of concept. By that time, stay tuned, stay curious, hit the like button, subscribe करो. उसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा बट मेरा बहुत हेल्प होता है. With that, and course कर दो 3,500. What else you want? This is the cheapest price ever, man.
cheapest price ever. I want the answer in the comment section. अगर तुमने यहाँ तक देखा है, that shows you are dedicated for CSIR and I wish कि तुम निकाल लो. चलो फिर, जय हिंद.